अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योलो चैट्स। सो पिछले वीडियो में यू हैव लिस्टेड डाउन ऑल द एक्टिविटीज़ दैट यू रियली लाइक टू डू। उसके अगेंस्ट आपने एक ग्रिड बनाया है टाइम, मनी एंड एनर्जी का। उसके अंदर से आपको एक्टिविटीज़ मिली हैं, वो सब एक्टिविटीज़ जो आप फिर भी करेंगे अगर आपके पास टाइम ना हो, आपके पास एनर्जी ना हो, आपके पास मनी ना हो। What I like you to do now is वो सब एक्टिविटीज़ एक अलग पेपर पे निकालें। You have to do a deep immersion. Deep immersion is that you put yourself in a situation where you will think, what is life without this one thing? And not just from few aspects of your life, every aspect of your life. So for example, मैं अपना ले लेती हूँ because पिछले example में I talked about two of my things that I would do even if I did not have time, money or energy. One of them was helping people and second of them was social media. So if I am talking about helping people with their everyday problems, I am going to put myself in a situation where I see people constantly asking me for help, but I am not giving them the help. Maybe I don't have the ability anymore to give that help or something like that, या मैं देना नहीं चाह रही या जो भी है। तो सिचुएशन इज मैं वो मुझसे हेल्प मांग रहे हैं या मैं इर्द गिर्द लोगों को देख रही हूँ वो हेल्प सीख करते हुए और मैं वो हेल्प नहीं दे रही। सो देन यू हैव टू कम्प्लीटली इमर्ज योरसेल्फ। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ये ऐसे नहीं होगा कि आप आईज क्लोज करेंगे एंड यू विल गेट इनटू इट। इट विल रिक्वायर सम ऑफ योर इमेजिनेटिव पावर्स। यू हैव टू क्लोज योर आईज, टेक डीप ब्रेथ्स, थिंक अबाउट, इमेजिन करें वो एक लाइफ, वो सब चीज़ें अपने ब्रेन के अंदर कि अच्छा ये ज़िंदगी है मेरी, ये सेटअप है, ये उसकी स्टोरी है, इस स्टोरी में ये सब कुछ हो रहा है, बहुत सारे लोग मेरे से हेल्प मांग रहे हैं, मैं हेल्प नहीं दे रही हूँ। उस इमर्जन के अंदर आपने 10 मिनट रहना है एंड यू टू थिंक अबाउट कि ये चीज़ अगर मेरी ज़िंदगी में ना हो तो किस तरह के डिलेमास मेरी लाइफ में आते हैं, यानी वो किस तरह के वॉइड्स हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो मेरे दिमाग में आते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई थिंक ऑफ अ लाइफ वेयर आई कांट हेल्प पीपल विद एवरी डे, या लोग मुझसे हेल्प मांग रहे हैं या मैं देख रही हूँ लोगों को हेल्प चाहिए और मैं नहीं दे रही हूँ, तो आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि मैं क्यों नहीं हेल्प कर रही हूँ या मैं क्यों नहीं हेल्प कर पा रही हूँ, क्या है मेरे अंदर, वट इज़ लैकिंग इन मी कि मैं हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। क्या मैं सेल्फिश हूँ? क्या मुझे उनके लिए दर्द नहीं होता है? क्या क्यों मैं नहीं कर पा रही? डू आई नॉट वॉन्ट टू हेल्प देम? अगर मैं हेल्प नहीं कर सकती तो मैं क्यों इस दुनिया में, मतलब क्या करने आई हूँ मैं अगर मैंने लोगों को हेल्प ही नहीं करना तो। सो यू हैव टू थिंक अबाउट डीपली अबाउट ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द डिलेमास, ऑल द डाउट्स दैट आर गोइंग टू पॉप अप। आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया, बिकॉज वो भी थे मेरे पिछले में। And social media, so for social media when I'm talking about immersion, I'm not just talking about not being able to post it on social media sites such as Insta, Snapchat, everything. Social media and the oldest form of social media is telling other people about it. So posting pictures or telling other people. So for example, you go to a party and you tell people, oh, I went on a vacation. That's also social media. So when you're going into that immersion, you have to eliminate that as well. So let us for 5 seconds assume आपने कोई एक ऐसी चीज़ ली है जो आप हमेशा से लेना चाहते थे, right? You're really happy about it. Let's suppose कोई sneakers हैं, कोई shoes हैं, a car, a camera, a phone maybe, and you took a vacation. एंड यू कांट टेल एनीवन अबाउट इट। आप किसी को नहीं बता सकते, ना आप अपने सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट कर सकते हैं, ना आप अपने किसी दोस्त को बता सकते हैं, लिटरली किसी को दुनिया में नहीं पता चल सकता कि आप किधर वो चीज़ लिए। थिंक अबाउट इट, वुड दैट थिंग स्टिल होल्ड वैल्यू? वुड यू स्टिल बी एक्साइटेड अबाउट इट? इफ़ यू आर स्टिल एक्साइटेड अबाउट इट, देन थिंक अबाउट व्हाई आर यू एक्साइटेड अबाउट इट। So for example, if you went on a vacation and you did not tell anyone, let's suppose you went on to vacation to Europe, but you did not tell anyone, you're not allowed to tell anyone, आप बता ही नहीं सकते किसी को, एक बंदे को भी नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं, then why did you take that vacation? What are the reasons? Did you enjoy it? You can't post any pictures of it. Would you still cherish it? Would you still
think it's worth spending 4 or 5 lakhs on that kind of vacation? Yeah, on that kind of money. And if you think that उस चीज़ का charm ख़त्म हो जाएगा if I'm not able to tell people, then you need to question कि क्या है इस चीज़ का charm. क्या ये charm इसलिए है because I can tell people? So you have to completely immerse yourself into it. You have to think about the dilemmas, the kind of feelings, and be completely honest about it. Don't try to make sense of it. कोशिश ना करें कि मैं इसको logic sensible कर लूँ कुछ. No, this is your raw emotions. You need to pen them down. You need to write it. जो भी आपके जहन में आ रहा है, you have to pen it down. Write it down. You feel bad. I'll feel disgusted. I feel कि क्या फ़ायदा है इतनी महंगे कपड़े लेने का अगर मैं किसी को बता ही नहीं सकती I'm wearing brands. क्या फ़ायदा है इतनी महंगी गाड़ी लेने का if I can't take my friends out on a ride. You have to question कि क्यों कर रही हूँ, फिर क्या वजह है. Then what is the reason for me doing it? Then why do I go on to social media? If you enjoy, let's suppose I just enjoy clothes, branded clothes because I like them, the design is great, ये सब चीज़, I really don't care अगर social media पे. Then why do I have this urge to post it on social media? Then why do I push on social media? Then why can I do social media, all of that? So ये सब सवाल हैं. This is going to be dilemmatic. Your brain might say, oh this is all crazy, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब चीज़ें step out of it, छोड़ दो इसे. That is even more a sign that why you need to do it. Why? Because you are asking tough questions. आप अपने बारे में अपने आप से मुश्किल सवाल कर रहे हैं. एज अ ह्यूमन हमारी नेचर है कि जब भी ज़रा सा ही कुछ मुश्किल आती है ना, तो हमारा ब्रेन एंड हार्ट इज़ लाइक ओ छोड़ो इसको, पतली गली से निकल जाओ, टेक द इजी वे आउट. जहाँ हमें पता चला कि ये बहुत कोई मुश्किल सवाल होने लगा है, लाइक नो इट वाज ऑल फन, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, नो आई डोंट वांट टू डू इट एंड आई विल मूव आउट ऑफ इट. यू गेट अनकंफर्टेबल. इट्स ओके टू बी अनकंफर्टेबल. Uncomfortable is the place where you grow. Nobody grew in the comfortable place. So it's okay. It's only you. There's nobody else that's seeing. There's nobody else that's listening. At least be open and be honest enough to be uncomfortable with yourself. Ask those tough questions. Really thorough you down. Drill down yourself. कि भाई क्यों कर रहे हो तुम? Why are you doing this? क्या वजह है? I hope that helps. Because YOLO, so why not do it best in the only life that we have?